appropriate packaging of our electronic product. पैकेजिंग पे बहुत सारा ध्यान होता है. Okay. So we have to think about various aspects like वायरिंग का लोड कम करना है. ओके. योर डिजाइन मस्ट बी मैन्युफैक्चरेबल, असेंबली आसान होनी चाहिए, डिसअसेंबली भी और मेंटेनेंस भी आसान होना चाहिए. ओके. देन वी हैव टू थिंक अबाउट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ आवर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट. ओके. देन today we are discussing about vibration and shock. Okay. So if you are having a design for let us say रॉयल एनफील्ड, उसके लिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग और सर्किट्स बनाने हैं. We know that Royal Enfield do have lots of vibration and shock kind of nature due to its engine design, and that is one of the marketing strategy for Royal Enfield. So you have to think about कि भाई कौन से पार्ट में ज्यादा वाइब्रेशंस जनरेट हो रहे हैं, कौन से पार्ट में शॉक्स सबसे ज्यादा लगने वाले हैं. जैसे कि भाई आपका हेडलैम्प हो गया, वहां पे यूजुअली सबसे ज्यादा शॉक्स लगते हैं. So accordingly, we have to find out the problem areas where we have to concentrate on the electrical part, their durability, their reliability, okay, or kind of stress they are going to face. If you look into this first diagram, I will move it a little. This one is the first diagram and bottom is the second diagram. So first diagram says, okay, whenever we are going to have vibrations, we are always associated with some sort of frequency. Okay, frequency है मतलब you will have some sort of harmonics playing role into the solid structures. So always think about those vibrations, those fundamental frequencies with which your electronic circuit PCB or its foundation is going to vibrate. According to that, we have to think about the connectors. Okay, so you can think that you can see over here. I will zoom it in a little. इसको साइड में ले लेता हूँ. Okay, so we have enclosure front panel. ये front panel हो गया enclosure का. Okay, this is a kind of back plane. Okay, जहाँ पे आपके connectors लगने वाले हैं. क्या लगने वाले connectors. So if you observe कि भाई आपके पास ऐसे vibrational mode है कि जहाँ पे एक ही loop बन रहा है या फिर you will have 2 loops or you will have 3 loops. Where to place the soldering joints? We have to think about that. We want to place the soldering joint at the minima of vibrations. जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस में देख रहे हो तो मिनिमा इज ऑन द कॉर्नर. इन सेकंड केस देख रहे हो तो मिनिमा ऑफ वाइब्रेशन नोड्स इज एट द सेंटर एंड द कॉर्नर, तो वहां पे रखो. ओके. इन थर्ड केस यू कैन फाइंड द मिनिमा ऑफ वाइब्रेशन इन दीज एरियाज, तो वहां पे यू कैन पुट द सोल्डरिंग जॉइंट्स सो दैट our soldering joints or fixtures or connectors will have minimum vibrations. Okay, will have minimum vibrations. If you think about, if you look at the second diagram, okay, you have kind of different connections over here कि भाई कैसे connections होने चाहिए if you are designing an electronic product for the vibration and shock prevention. So if you have longer leads, this is a kind of bad design because जो vibrations और shocks आने वाले हैं, those are going to travel your through your leads as well. So make your leads of the components as short as possible. Okay. Then if you are having some floating components जो हवा में थोड़े से float हो रहे हैं, it is little bit at a higher level than the PCB को touch नहीं कर रहे हैं. So don't stretch the leads of the components. Instead, loosen them. थोड़ा सा loose रखो so that they can handle the vibration and shocks. Okay. Otherwise खींच के एकदम tight करके उसके leads आपने pack कर दिए, those will be susceptible to breaking of your leads. Okay. Then you do have larger capacitors or you will say inductors. Okay. अगर वो चीजें हैं, those are heavy in their dimensions and size and weight. Okay, those are heavy components.
Those are not light as resistors or SMT components. If you do have larger capacitor and inductors, always provide them a housing. उनको एक थोड़ा सा housing type दे दो, enclosure दे दो, so that they won't vibrate. Because if they start vibrating, they will loosen the soldering joints. तो उनको थोड़ा ध्यान रखिए और उनको टाइट कर लीजिए with providing special enclosures for them. If you do have some these kind of geometries for the electronic items, try not to put your electronic items in a vertical position. Instead, put them in a horizontal position, and for them also put some sort of housing so that they won't pop out from your PCB. Okay. बाद में जो पावर बैंक होता है, पावर सप्लाई सेक्शन होता है, never put it into the center of your PCB or design. Okay. पावर सप्लाई हमेशा कॉर्नर पे ही रखो. क्यों? Because we want to avoid some EMI generated due to the पावर कॉइल्स, जो ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं या फिर एसी-डीसी कन्वर्टर्स होते हैं या बक बूस्ट कन्वर्टर्स होते हैं, तो उनकी वजह से जो EMI जनरेट होने वाला है, we want to keep that EMI as away as possible from other electronic components. Okay, so always try to have your power supply section not into the center but at the corner of your design, PCB design. Okay. So vibration and shock. While thinking about vibration and shock, we have to go through various problem areas, which includes cables and connectors. कौन से प्रकार की केबल यूज करने वाले हो, कौन से टाइप के कनेक्टर्स यूज करने वाले हो. Okay, cables, whether you are going to have a PATA, SATA, which type of cable you want to use. Okay, flexures, ये जो वर्ड है, you might have observed कि मैकेनिकल असेंबली में जहाँ पे भी कर्व्स होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, and those curves are more susceptible to breaking them if they have a large amount of vibration and shocks. Okay, so flexures has nothing but the curves in the mechanical assembly and housing. Okay, flexures stress at junction of lead and component body. You are going to turn the leads of your components, so you have to think about the amount of stress the leads are going to handle. If components are shaking, then टाइटन देम. जैसे ये इसमें देखा था कि भाई सी जो पार्ट है कि आपका इंडक्टर कैपेसिटर है, हैवी है, एंड दोज आर ससेप्टेबल टू शेकिंग विद रिस्पेक्ट टू द वाइब्रेशन, तो उनको भाई टाइट कर लो. देन वी हैव टू थिंक अबाउट द ट्रांसफार्मर्स, बैटरीज एंड लार्ज कैपेसिटर्स एज वेल. along with that we have to think about the mechanical relays chattering. मतलब क्या, अगर आपके डिजाइन में बहुत सारे रिलेज है, रिलेज आर गोइंग टू हैव योर coils and all of them are the mechanical relays. तो you have to think about कि भाई आपकी वाइब्रेशन की वजह से ना रिलेज का कॉइल खराब ना हो या फिर उसके कनेक्शंस खराब ना हो. So therefore usually the relays you purchase from the market do have plastic casing. Okay, मतलब बहुत ज्यादा वाइब्रेशन और शॉक आए ना तो प्लास्टिक उसको हैंडल कर लेगा, एंड if it is beyond the handling condition, plastic will break, but your internal components, the copper plates, the inductors will be intact. Okay, those won't get any harm. So this was a kind of मतलब प्लास्टिक क्यों यूज करना है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में टू हैंडल द वाइब्रेशंस एज वेल एज शॉक. द एग्जांपल्स यू कंसीडर फॉर द व्हीकल्स. पहले व्हीकल जो थे वो पूरे पत्रे की बॉडी होती थी, आयरन की बॉडी थी, हमारे स्टील की बॉडी थी. But nowadays, the front part of your vehicle, especially Activa, Access, this kind of mopeds, they do have fiber body. Because if you do have kind of impact, accident अगर होता है, so your fiber is going to absorb all the vibration and shock. And if it is beyond certain level, it will break. But due to that, those vibrations will not reach to the human hands, human body. वो थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशन काइंड ऑफ डिजाइन हो गया है. ओके, सो ऑल द मोपेड्स आर हैविंग अ फाइबर बॉडी
to handle these kind of vibration and shocks. The next point is foundation of circuit operations. अभी सर्किट ऑपरेशन में आपको मतलब सभी चीजें पता है कि भाई कौन कौन सी चीजें पता मतलब कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है. ओके, so good design of electronic circuit begins with the grounding and shielding of the electronic equipment. Okay, shielding बहुत ज्यादा important है, otherwise your you will face जो CRO पे readings लेते थे ना आप, बहुत सारा noise आता था, your waveforms never get stabilized. All those are problems of grounding and shielding.